I am Coach Rohit, your guide and your coach, where we will learn together step by step to how to become master in chess. Okay, so today's free class is about King's Pawn opening, the most powerful and the best way to start your opening games. Okay, so till that time, जब तक सारे players आ रहे हैं, we will try to do some puzzles, right? तो हम थोड़े पजल स्ट्रिक करते हैं जब तक all the players are coming. जैसे सारे प्लेयर आ जाएंगे we will start also the king's pawn opening very quick. हाँ, चलो let's go. Okay, where it is? Yeah, here we go. So okay, let's start with the puzzle string. Okay, for just 2 minutes we will do puzzle string, and then we will go with our chapter. We are already on 14 puzzles. Okay, so this is perfect. Board is perfect. Let's go. So इसमें क्या, जब भी हम पजल करते हैं हमें दोनों बोर्ड को स्कैन करना है, दोनों तरफ से सोचना है. And we will always start with our check, captures, threats, moves. So it's white to play, and if you see, this queen is protected by the bishop, and we have a chance to capture this bishop with the check. If the queen will go back, we have a rook to capture it, and that's how we will get an advantage. It's like eliminating the defender. Okay, let's go for next. Again, we will first scan the board, what is happening on this board, and then we will go with the check capture style. So if you see, we are already attacking this queen, but our queen is also under attack. The best way तो हम capture कर ही लेते हैं because we are capturing the bishop and we got this queen. तो bishop और queen दोनों मिल गए हमें हमारे bishop के लिए. अब यहाँ पर देखते हैं अगेन ऑब्वियसली वी ऑलवेज डिस्कस कि हमें चेक कैप्चर थ्रेड के साथ ही जाना है. तो हियर चेक इज कमिंग, दिस थ्रेड इज आल्सो कमिंग, राइट? और देयर इज एनी अदर थ्रेड? आई थिंक वी विल गो विद दिस थ्रेड. So we are attacking this, we are attacking here, and also this is the thread. So now we got it, right? Now we will go with next puzzle. Again, white to play. We will see check captures threats. We are getting again free bishop, but if we will capture this, we will just suddenly lose the knight, right? और दूसरा कोई options? If we will go here, king will come on this square. और कोई check, फिर से check है, but the rook will capture this. Oh, this rook will come and this is a mate. Wow, check and checkmate, right? So it's just a simple checkmate. जब भी आप puzzle कर रहे हो, remember always start with the check captures thread. Okay, that always work. Okay, I think I'm not getting your chats, guys. Are you active there? If you can also write down your chats. आज हम King's Pawn opening खेलेंगे. Good morning, sir. Hey, Shivam, thank you so much for replying. Very good morning. How are you, champ? तो अभी आज टुडे इज द वेरी फेवरेट चैप्टर ऑफ एवरी प्लेयर्स, राइट? दे ऑल वांट टू नो सम ओपनिंग लाइंस, लेकिन हम इंटरमीडिएट लेवल की ओपनिंग सीखेंगे. वी विल सी 4 to 5 लाइंस ऑफ एवरी ओपनिंग. फिर आप लोग उस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना टू प्ले विद एवरी ओपनिंग एंड सी इन विच ओपनिंग यू आर कंफर्टेबल. तो वो शेयर करना मुझे इन चैट. वेरी गुड, नाइस, थैंक यू सो मच वार्लॉर्ड. हाउ आर यू? जैसे ही आप लोगों को ये धीरे धीरे फील होने लगे, ओके दिस ओपनिंग इज लाइक आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल इन दैट ओपनिंग, हम धीरे धीरे उस पर एक ओपनिंग रेpertoire भी बनाएंगे फॉर ईच एंड एवरीवन. ओके, तो बट टुडे इज लाइक किंग्स पॉन ओपनिंग में कितनी ओपनिंग्स होती हैं, एंड वी विल सी ऑल 4 to 5 लाइंस ऑफ एवरी ओपनिंग. The algorithm stuck at 400 elo. What should I do? See, there are so many things algorithm who are like आपको को लोग बताएंगे puzzle करो, game खेलो, and that's how you will improve, right? और it's not stuck. आपको learn one thing and try to implement in your games. Okay, एक चीज सीखो, उसको implement करो, and that's how you will do. Warlord C2 to D1. Okay, it's C2 to D1. ओके, तो मतलब आपने बोला क्वीन को C2 चलो, सॉरी नाइट को C2 चलो एट D1. वेरी गुड, दैट्स नाइस. सी ही इज ऑलरेडी फोकस्ड, दैट्स नाइस.
चलो लेट्स डू मोर पजल्स. हमें ज्यादा पजल नहीं करने. लेट्स लास्ट पजल एंड देन वी विल सी स्टार्ट लुकिंग एट आवर ओपनिंग्स लाइन. ओके, तो टुडे इज लाइक किंग. ओके, अगेन पजल्स. चेक कैप्चर थ्रेड. तो हम देखेंगे चेक कैप्चर थ्रेड में क्या आ रहा है हमारे पास. And always scan the board. So it's also a mating threat on our king. So we always look our opponent plan first and then we will start with. अगर हम पे checkmate का threat आ रहा है तो we need to go with the threats only all the times. So let's see. Wow. Thank you so much. तो हम यहाँ पे जाएंगे and that's how we will save our checkmate and gotten bishop. Very good. Yes, correct, Warlord. Your answer is correct. Okay, guys. So let's go. Now we will start our opening lines. और मैं आप सबसे ये भी पूछूंगा कि कौन सी ओपनिंग है. यू ऑलरेडी नो अबाउट दोज ओपनिंग्स एंड नॉट. ओके. तो किंग पॉन ओपनिंग में, किंग पॉन ओपनिंग इज अ वेरी वेरी फेमस ओपनिंग, राइट. तो काफी टाइम से चला, जब से चेस स्टार्ट हुआ है, वर्ल्ड नोज अबाउट चेस. किंग्स पॉन ओपनिंग इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर गेम्स. ओके. तो आज हम देखेंगे सम ओपनिंग्स विद द किंग पॉन. तो फर्स्ट ओपनिंग वी आर गोइंग टू सी दिस e4, e5. ऑब्वियसली हमें को सेंटर कंट्रोल करना है. नाइट f3, नाइट c6, डेवलपिंग द नाइट टुवर्ड्स द सेंटर एंड बिशप b5. क्वींस गैम्बिट. वालोट, आज का हमारा टॉपिक ही है कि हम किंग्स पॉन ओपनिंग देखने जा रहे हैं. ठीक है, तो हम क्वीन पॉन ओपनिंग वी विल सी आल्सो लेटर इन आवर अपकमिंग क्लासेस. ओके. अब मुझे इस ओपनिंग का नाम बताओ. विच ओपनिंग इज दिस? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ओपनिंग? So you guys can also use this opening in your games. Tell me the name of this opening. You guys already know about this opening or not? इस opening का नाम क्या है? Quick, 1 minute for everyone. तो इससे आपको बहुत सारे ओपनिंग के बारे में पता चल जाएगी कि किंग्स पॉन में कौन सी ओपनिंग खेली जाती है, क्वींस पॉन में तो वी विल कम विथ लेटर विथ ऑल द पॉन्स. ओके. हेलो अंकित. गाइस, nobody knows about this opening name. आर से स्टार्ट है सर, नाम याद नहीं आ रहा है. यस, वेरी गुड, दैट्स राइट. इट्स स्टार्ट विद द आर. इट्स रूई लोपेज. ओके. इस ओपनिंग का नाम है रूई लोपेज. ओके. और हम इसको ऑल्सो वी ऑल्सो कॉल इट स्पेनिश ओपनिंग. यस, रूई लोपेज विथ ऑल्सो स्पेनिश ओपनिंग. ठीक है, जहां पे बिशप विल कम फ्रॉम अ b5 स्क्वायर. चलो, तो इफ यू गाइस वांट, दिस इज अ वेरी फेमस ओपनिंग एज वेल, वेरी ओल्ड ओपनिंग. मोस्ट ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स लाइक टू प्ले दिस ओपनिंग. और आज भी, आज के टाइम पे भी अगर आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप देखा होगा, कैंडिडेट टूर्नामेंट देखा होगा, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर फॉलोइंग दिस ओपनिंग. स्टिल दे आर फॉलोइंग दिस ओपनिंग. ओके. तो हम लोग भी जा सकते हैं. अंकित, नो प्रॉब्लम, वी आर ऑल्सो लुकिंग ऑन ओपनिंग. हम बिगिनर से ही खेलना स्टार्ट करा है हमने. ठीक है. नाउ अब हम चलते हैं दूसरी ओपनिंग देखने. ठीक है. वेरी गुड जावेद, करेक्ट आंसर. सो अगेन किंग पॉन ओपनिंग e4, e5, सेम मोस्टली यही आएगा. Knight f3, knight c6, and here let's see white plays d4. Now tell me which opening is this? This is also one of the very famous line from e4 opening. Tell me the name of this opening. What is the name of this opening? अभी हम सिर्फ किंग पॉन ओपनिंग्स देख रहे हैं जहां पे हमारा किंग पॉन, वी विल स्टार्ट विद द किंग पॉन ओनली. Okay, today's topic is about that only. Tell me the name of this opening. Now 1 minute for this. Let's see who knows about this opening. Good champs. हम बिगनर लेवल से ही देख रहे हैं. वी आर नाउ वी आर इन इंटरमीडिएट लेवल, सो वी आर वर्किंग ऑन आवर ओपनिंग्स एंड as well. Tell me, anybody knows about this opening? e4, e5, knight f3, knight c6, and d4. Last minute. Yeah, it's a Scotch game. Okay, Scotch opening. That's nice. Even you already know so many names of opening. That's great. Very good. So it's a Scotch. Yes, perfect. It's a Scotch opening where uh, white is coming from the center. White center में attack करके तुरंत center पे like they started attacking from the center only. Okay, कि हम center में exchange करेंगे and we will play in the center. So that's Scotch opening. Okay, let's see the next one. अब आते हैं, let's see who knows about this opening. This is also very famous and most of the beginners and intermediate players start like this only.
So e4, e5, knight f3, knight c6, and the bishop will come to c4. Okay, you guys have 1 minute to tell me the name of this opening. Tell me what is the name of this opening. इस opening का नाम बताओ quick. So you guys can follow if you want. You can also try to use these openings in your game. और आपको पता रहेगा कि आप कौन सी opening खेल रहे हो. तो you can watch world champions and grandmasters games on those openings to understand their strategies and plans, how they are making plans in those openings. Perfect, Shivam. Very good. Italian game. This is the Italian opening, right? Chalo. Now we already saw some openings. Now let's go for next. Now अब हम थोड़ा से अपने openings के lines को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? We will solve the just the opening line like 2 to 3 moves. Now we will go little bit further. So e4, e5, knight f3, attacking the pawn, obviously. Knight c6. Black also came, develop his knight, and also defending the pawn. This is the simple strategy in this opening. Okay. Knight c3. Abhi knight c3 comes, and now let's go see the next move. Knight f6. Okay. अब मुझे बताओ which opening is this one? Knight f6 किस opening को characterize करता है? This one. 1, 2, 3, 4. All 4 knights developed. That's called 4 knights opening. और ये बहुत famous है in a beginner level or in intermediate level. Okay, बहुत सारे players used to play this in a beginner level or in a intermediate level. Yeah, 4 knights. Amazing. Yes, correct. Very good champions. Yes, this is a 4 knight opening. अब इसमें हम continue कैसे करते हैं? Here, white will start. The next move, white's the famous move main line is to go with the bishop b5. Very good, Hadas. Bishop b5. अब इसके बाद जो line आएगी from a white side जो which is main line, most of the world champions grandmasters used to play this. It's called जो सबसे ज्यादा बार खेली गई है. It is bishop b5. Okay, so you guys can go with the b5. And यहाँ पर एक threat भी आता है. Let's see. Knight d4. Threatening the bishop to capture. क्योंकि bishop superior pieces होते हैं in opening. So guys, tell me what will you play? What is the next very main line in this opening? आप यहाँ पे क्या करोगे? You are getting a free pawn. You have a chance to exchange the knight also. Or what else you will do? Tell me, quick, 1 minute. You guys have 1 minute to write down the answer. Or maybe, sorry, I did not. मैंने सेटिंग सही नहीं की तो मुझे थोड़ा सा जो कमेंट्स है ना वो लेट मिल रहे हैं तो डिले हो रहा होगा. आई फॉरगॉट टू सेट दैट. तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम से उसका ध्यान रखूंगा. आई विल सी एंड डू दैट. तभी मुझे लग रहा है थोड़े से चैट्स जो है वो डिले, मतलब मैं आगे चल रहा हूँ वो लेट आ रहे हैं. Knight take d4. Perfect. Hardest knight take d4 is the third best line. a2. a2 to a3. Maybe you want to play. Okay, bishop a4 you want to play. This is the amazing move, Javed. Agar if you want to play your bishop a4, that's a second best line. And yes, bishop a4 is the first main line in this opening, and the bishop c4 is the second main line. Okay, याद रखना आप या तो bishop को बचा लो a4 c4 चलकर या knight exchange कर लो यहाँ पे. These 3 lines are perfect lines. You can continue with those, but don't capture this pawn. Capturing this pawn is not good. It's a mistake in this line. Okay, आपका एक तो पहले आपका bishop चला जाएगा, and also opponent pieces will get more active very quick. Okay, और mating threats are also there. मैंने पहले बताया था, but maybe we will see those traps in our upcoming class. Trap के लिए भी हम एक क्लास करेंगे जहां we will see all the traps. Okay, now next move यहाँ पर obviously bishop c4. Okay, and now यहाँ पे obviously now it's black turn. Black will also continue to start development from his king side. हमेशा याद रखो, it's best, the best move is in opening to start your development from the king side. This is the best line. Okay,
तो यहाँ पर ब्लैक इज sacrificing his pawn for a development, or if you want you can take it, if you don't want you can just continue this game while developing and by doing castling also, right? d3 यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, knight into e5 ऑप्शन मिल जाएगा, and castling, these all moves are there which is equally good. Okay, so this is about knight, sorry, 4 knight opening. Now let's see, let's go. अभी हम देखो कैसे सीख रहे हैं, पहले हमने 4 लाइन देखी, we saw 4 lines of the opening, then we saw 6 to 7 line of the opening. So that's how we will improve our, prepare our openings. Okay, और the best way to use this in your game, जो आपने सीखा है उस opening को अपने game में use करो. That's how you will also understand all those openings and become comfortable on those openings. Okay, चलो अब now हमने रुई लोपेज देखा था. Okay, रुई लोपेज की लाइन क्या है? Try to write down in chat. तो रोय लोपेज की लाइन को आप, वी विल गो लिटिल बिट फर्दर विद द रोय लोपेज लाइन. गो अहेड, लेट्स राइट इट डाउन. एंड आप ट्राई करो किंग्स पॉन ओपनिंग ये खेलने की, और शेयर दोस गेम्स विथ मी इन कमेंट इन चैट इन दिस वीडियोस. ये आपको बाद में भी मिल जाएगा. इसमें शेयर करो कि आपने ये ओपनिंग खेली. वी विल सी, एंड जब हम लाइव खेलने आएंगे वी विल ट्राई टू प्ले, अंडरस्टैंड what is the best move while playing games in a middle game, how to plan, how to make strategies. Okay, in our upcoming classes we will also see that. Okay, so let's go. अब दिखाते हैं रोय लोपेज में कैसे वी विल गो फर्दर. तो रोय लोपेज ओपनिंग सिंपल, e4 e5 knight f3 knight c6, same thing, but here the white will develop his bishop from b5, like he's threatening that I will capture this knight but and get the pawn, but it's not good right now, but later it's a threat. Okay, now let's see how opponent will continue. Bishop b5. Very good, Javed. Nice. That's really nice. You guys are also giving lines in chat. That's great. Very good. Okay, perfect. So here the opponent will, black will continue. Black will not worried about to capture this and save this. Okay, so black will continue with a6. ठीक है, black a6 चलेगा तो threatening bishop, and he's asking, do you really want to capture my knight and get this pawn? If you really want you can do it. ये गलत मूव है. ओके, दिस इज नॉट अ वेरी गुड मूव टू कैप्चर दिस एंड गेटिंग दिस, बिकॉज यहां पर फिर, टेल मी व्हाट इज द बेस्ट मूव हियर फॉर ब्लैक. अगर व्हाइट ने बिशप को कैप्चर किया एंड देन इफ व्हाइट विल कैप्चर द पॉन, आफ्टर दैट व्हाट इज द बेस्ट मूव फॉर ब्लैक? यहां पर ब्लैक की बेस्ट मूव क्या आएगी? Why it's a bad move for white? How black will continue from here? Bishop a4. Bishop a4 तो आ ही नहीं रहा ना. Bishop a4 was the white's best move. Yes. You can also play knight f6. Yes. हम knight f6 के साथ भी जा सकते हैं. This is called Morphy defense. जब हम a6 चलते हैं, that is called Morphy defense. Very famous move. Queen d4. Very good. Not a5. यहाँ पे आराम से हमें queen d4 चल देना है. Now it's a double attack. Attacking the knight and also attacking the pawn. Now the opponent has to defend his knight. जब वो knight को defend करेगा, we will get his center pawn. Okay, और हमारे bishops becomes very active. और now we have a, black has a pair of bishops, superior minor pieces, which is also very good. Okay, perfect guys. You guys are amazing. You already know about that thread. That's great. Yes. तो यहाँ पे best move आती है from white. White will continue from a4 only. Okay, this is called a Morphy defense when the black is coming from a6. ठीक है. अब यहाँ पे let's go knight f6. Obviously, they will focus on development from the king side. Okay, castling. Bishop e7, the close variation. Okay. Rook e1 coming the center. b5, bishop b3, d6, c3, and c3 is plans to start attacking from the center, and the knight will go from d2 to f1 to g3 or e3. So this is the plan. So he will come here. Now, this is also one of the move people mostly come here to block, but it's first they used to do castling. उसके बाद आपको h3 चल देना है जिससे कि ये पिन ना आ रहा हो after his castling. Okay,
Now, this is all 9 moves about the Royal Lopez opening. Maybe first try to remember this, try to play from here. तो आपके 9 मूव प्रिपेयर हो जाएंगे एंड जब आप ये गेम खेलना स्टार्ट करोगे यू विल सी व्हाट अदर मूव्स ओपोनेंट्स आर प्लेइंग सो यू कैन जस्ट सी द ग्रैंड मास्टर्स गेम्स सो यू विल प्रिपेयर वन मूव एट अ टाइम सो अगर आप 30 मूव्स खेलते हो देन यू कैन प्रिपेयर 30 मूव्स ओके सो इस तरीके से हम ओपनिंग प्रिपेयर करेंगे ओके दैट्स ऑल फॉर Roy Lopez, okay? The closed variation Morphy defense. Now let's go to see Scotch opening. हमने Scotch opening की लाइन देखी है. Tell me the Scotch opening line. क्या है Scotch opening की लाइन? Quick. Tell me in chat. क्या है Scotch opening की लाइन इसमें? What is the main line of Scotch opening? Guys, 1 minute. Quick. It's a very quick class. Free live chess class at 11 a.m. Monday to Friday. Mostly this class is going for a 30 minute only. Okay? जिसमें हम we will always learn one topic at a time. फिर आपको वो practice करना है. Then we will come live to play. Okay? Hi धन्य Yaneshwar. DN Yaneshwar. It's okay. You can also check. You can see this. अभी हम नई ओपनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो प्रीवियस वी चेक्ड यू कैन चेक आफ्टर अ क्लास ओके E4 E5 knight F3 knight C6 no bishop C4 is Italian sorry no it's okay E4 E5 knight. Yeah bishop C4 is Italian yes Javed your move is correct E4 E5 knight F3 knight F6 D4 perfect E4 E5 knight F3 knight C6 and D4 that is the Scotch opening right अब यहां पर हाउ ब्लैक एंड व्हाइट कंटिन्यू दिस गेम अब यहां पर कैसे दोनों गेम खेलते हैं श्योर वेरी गुड नाउ लेट्स कंटिन्यू हियर सो मोस्टली यहां पर ब्लैक विल कैप्चर द पॉन दैट इज द ओनली गुड मूव फॉर ब्लैक अगर वो कुछ और चलता है देन यू विल गेट मोर स्पेस इन द सेंटर एंड दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर व्हाइट ठीक है तो ई इंटू डी फोर यहां पर सिंपली आपको नाइट से कैप्चर करना है द मेन लाइन ओके द मोस्ट फेमस लाइन if black will capture with his knight that is not good for black because the queen will get activated in the center and queen को center से हटाने के लिए there is no piece for black okay so he will not capture it this is a very common response from a black कि वो bishop c5 करेगा now he is putting more pressure on your knight you can also come with the bishop e3 the threat is कि अगर आपने अभी exchange नहीं किया then I will capture the knight and attack the queen and bishop पे discover attack आएगा right here nicely the black will play his queen f6 and they will continue here okay अब यहां पर अगर वो knight f6 चलता है तो that is blunder can you tell me guys why this is blunder hey Kushag champion how are you why you are late today now we are very close to end this class okay quick tell me guys why this is blunder knight f6 मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया let's see who is focused you guys are focused or not tell me why this is blunder quick in a Scotch opening knight f6 why it's blunder see आप लोगों को कुछ threats और trap भी मिलेंगे which you can use in your game अगर आप beginner हो intermediate हो your opponent will miss these things yes very good knight into c6 takes c6 right Kusal very good Hardas हम c6 को कैप्चर करके we will create a discover attack on the opponent now here maybe he will capture with the b6 or d6 like d2 b6 or b2 c6 yes lose the exchange the knight and then the bishop or इससे we will get a advantage in opening only so that is very bad for him obviously here main line is to go with the queen c6 अब यहाँ पे जो मेन लाइन आएगा व्हाइट की तरफ से ऑब्वियसली हिज नाइट इज अगेन वेरी इन डेंजर और एक्सचेंजिंग इज नॉट इन आवर लाइक ओपनिंग में ट्राई करो एक्सचेंज से ज्यादा डेवलपमेंट पे ध्यान दो ठीक है दिस इज अ वेरी नाइस स्ट्रैटेजी ऑल द वर्ल्ड चैंपियंस ग्रैंड मास्टर यूजिंग इट टू विन हिज देयर मोर गेम्स ओपनिंग में मूव ऐसे ढूंढो जो एक्सचेंज से ज्यादा आपके ओपनिंग डेवलपमेंट पे फोकस करते हो ठीक है
And now see, this is a very good move position. This position is like it's very equal, very fighting chance from both the side. तो ये दोनों की तरफ से एक good line है, from a white side also, from black side as well. Okay, so this is a very good line from both sides. Yeah, C3, perfect Javed. Okay, so this is about Scotch opening. अब हमने Italian opening भी देखी थी, तो मुझे बताओ Italian opening की line क्या है? What is the line of Italian opening? You guys can see, try to play all these openings in your game. ठीक है, हमने 4 to 5 opening we are looking from a king pawns with the king pawns. Okay, now tell me the line of Italian opening. जो 4 line हमने देखी थी for Italian opening, write it down in chat quick. Italian openings की line बताओ champions, quick, 1 minute. I'm waiting. E4, E5, knight F3, knight C6, bishop C4. Very good, Hardas. Correct, champ. E4, E5, knight F3, knight C6, bishop C4. Very good, Shivam. Correct. Chalo, is Lichess better or chess.com? Both is better, Dhanesh sir. Both is better. It's based how you like to play. Okay, तो practice के लिए puzzle solve करने के लिए if you want to free access of unlimited puzzle आप Lichess पे जाओ, and if you want to प्ले ऑन chess.com, आप chess.com पे भी खेल सकते हो. chess.com पे आपको ज्यादा प्लेयर मिल जाएंगे खेलने के लिए इन फ्रॉम बिगनर लेवल. ओके, न्यू क्रिएशन बिशप टू c4. ओह दैट्स नाइस, बिशप टू c4. यस, हम नाइट बिशप c4 के लाइन देखेंगे. नाउ इटालियन ओपनिंग वी ऑलरेडी लर्न. नाउ वी विल सी सम लाइंस ऑफ इटालियन ओपनिंग. e4, e5, knight f3, obviously starting with the center, and bishop c4. Simple main line of Italian opening. Now we are going to see. तो यहाँ पर मोस्टली जो आपको रिप्लाई आएगा, जो मेन लाइन है, दैट विल कम फ्रॉम C5. यहाँ पे जब भी आप देखोगे ग्रैंड मास्टर्स को एंड वर्ल्ड चैंपियंस को खेलते हुए, दे विल गो विद द C3. दे वांट टू start attacking the center with the development also. Okay, it's like a very quick attacks comes in the center in Italian opening. ठीक है, now knight f6 attacking his pawn. Okay, knight f6, तो नाइट f3 के बाद नाइट c6 था. हाँ, इट्स ओके. ओ यस, हरदास ने पहले नाइट f6 बोल दिया था. इट्स ओके, समटाइम्स जी आपने भी नाइट g3 लिखा था, राइट शिवम? तो ऐसा हो जाता है, और आई अंडरस्टूड, दैट्स ओके, राइट? इट्स ओके. चलो, या यस, यहाँ पर वेरी गुड न्यू क्रिएशन. यहाँ पर जो बेस्ट मूव है, जो वेरी फेमस लाइन है, दैट इज d3. दिस इज द मेन लाइन ऑफ इटालियन गेम, जो कि आप ग्रैंड मास्टर पे लेवल पे देखोगे खेलते हुए. देयर इज वन मोर लाइन which I also learned when I started playing chess game when I was like a kid in a beginner level. D4. This is a Geico piano variation. Okay, it's the center attack variation. यहाँ पे simply pawn will capture the pawn. The pawn will capture the pawn again, attacking the bishop. Bishop will come from B4 and then knight C3. The like blocking the check. यहाँ पर हम एक pawn sacrifice कर रहे हैं. It's like gambiting one pawn. लेकिन this gambit happened because to do castling, and see now it's a quick threat on his knight. अब यहाँ पे प्लेयर के पास 2 choices है. Okay, black has 2 choices: capture with the knight or capture with the bishop. Okay, the best move is to capture with the bishop. लेकिन आप बहुत टाइम ऐसा भी देखोगे कि peoples are capturing with the knight. अगर वो knight से capture करते हैं तो simple pawn से capture करो, bishop से capture होगा, and then queen b3. That's an amazing move. Double attack on his bishop and the pawn on f7. From here you will get an advantage. If the black will capture your rook, simply capture f7 and then bishop g5 attacking the queen. Okay, and then you can go with the knight e5, or rook e1 is also giving you a chances to get quick his queen. Okay, so these moves are there, but knight e5 is best, protecting the bishop and also creating a space for your queen. So go and give a checkmate threat, and here check, and simply you will win the game in this position.
Okay, bishop is f6, and it's a mating threat, and there is no way to save. So this is the Italian opening, like Geico piano line. If the opponent will capture with the knight, तो आप simply, और मैं बताऊं, मैंने बहुत सारे गेम जीते हैं by using this line in my tournaments, in my FIDE rating tournaments, in my local tournaments. I really use this and won so many games. So you guys can also continue with this. But हाँ, उसको पहले practice करना to understand what will happen. If they will capture with the bishop, also there is one variation. Okay, like if they will capture with the bishop, let's go. This is the main line. यहाँ पर आपको simply pawn push करना है. Knight will come from here. Okay, यहाँ पे दो line है. If the bishop will go back, that's the best line for bishop. If the knight will come here, this is a mistake. Okay, again आपको जीतने के chances मिलेंगे. लेकिन let's go, let's see. Bishop now knight को pin करो, capture करो. And that's how you will both the players will continue this. Okay, and they will exchange, and this is the main line where both the players are getting equal balanced position. Okay, nothing is bad for anyone. और यहाँ पर आप center में pawn capture कर लोगे, but it's not like you will win quick. It will take time. What if bishop into c3? Yeah, I already showed you, right? Hardas, what if bishop into c3 is the main line. Okay, अगर knight into c3 करता है, आप instant win कर जाओगे. The bishop into c3 will come, तो ये लाइन हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, और यहाँ पर वी विल गेट दिस सेंटर, एक्टिव रुक्स एंड क्वीन, एंड ऑल्सो एवरीथिंग इज इक्वल. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप तुरंत जीत जाओगे. इट्स अ वेरी बैलेंस एंड इक्वली फाइटिंग पोजिशन फॉर बोथ. बस ब्लैक को थोड़ा वेरी क्विक, ब्लैक नीड्स टू डेवलप हिज पीसेस. ओके, तो चलो ये हो गया इटालियन लाइन पे D4 वेरिएशन. ओके, D3 इज अ पोजिशनल गेम. ओके, तो वो भी आप चेक कर सकते हो. नाउ दैट्स ऑल फॉर आवर किंग्स पॉन ओपनिंग. आपको कैसा लगा? यू रियली लर्न समथिंग? डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन इन योर चैट व्हाट योर फीडबैक्स. So I will try to improve in my next step. But this is a grandmaster's curriculum which I am sharing with you, which I am sharing with my kids. जब जो मैं जिनको सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, that's how we are learning. So don't forget to join every Monday to Friday to learn every day new topic which you can implement. और फिर इवनिंग में और midnight we will come here. आप तब तक प्रैक्टिस करो, फिर हम खेलेंगे साथ में. वी विल प्ले लाइव चेस गेम विद एवरीवन. आई विल ट्राई टू प्ले विद 5 to 10 पीपल. ओके, उसके उनके गेम्स को एनालिसिस करेंगे, एंड वी विल लर्न, रिव्यू एंड लर्न फ्रॉम आवर ओन गेम्स. ओके, क्लियर? So, all right, champ, that's your introduction of King's Pawn opening. The like this is the first step towards mastering in chess. Okay, most of the players start from this game only. Okay, so take care, see you, and don't forget to write down your feedback. और मैं इससे related shorts भी post करता रहता हूँ. You guys can also check out those shorts whenever you will feel that I forgot the lines. Check out the shorts. I forgot the strategy. Check out the shorts. Save it, share with your friends who also like to play chess. Okay, जिससे वो आपको हमेशा रिमेम्बर रहेगा. रिमेम्बर, इट्स अ गेम, तो आपको इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो प्ले, practice, and review from your own, like review and learn from your own games. See you guys, take care, bye bye. So now see you in our live playing session where we will play games every day. Okay, take care, bye everyone. And if you really like this stream, don't forget to like and share with your chess lover friends.